Training in sports. Chapter 10. So the process of okay. Hi everybody. Let me chat. Okay. So I would should not waste any time. More time. Okay. So the process of training is in trend since ages to achieve goals by human beings. In all older times, it was not possible to gain expertness in using a sword or spear without proper training. With time, the methods of training also kept changing, but no one can deny the fact that training is essential for excellent presentation. The main object of training is to make an individual skilled, strong, able, and capable. जो मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का वो ये है कि किसी भी पर्सन को हमें क्या बनाना है, स्किल्ड बनाना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें एबल बनाना है और हमें केपेबल बनाना है। कहने का मतलब ये कि जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इट बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, क्योंकि हमें किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन को स्किल्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, एबल बनाना है, केपेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल, किसी भी स्पोर्ट में एक्सपर्टीज के लिए we need training even to learn how to play the sword. We need training to expert in using to gain expertness in using a sword or a spear without um, yeah, the proper training is required. In this way, the significance of training has been recognized by all, and the term sports training is being used for it. इस तरह से जो सिग्निफिकेंस है ट्रेनिंग का वो सभी रिकग्नाइज कर रहे हैं, और जो टर्म है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वो यूज़ हो रहा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मतलब कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। इट कांट बी अचीव्ड विद इन अ डे, विद इन अ मंथ, विद इन आई से मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। इट टेक्स टाइम. So the more you get trained, the more you will be, expert in that area और फील्ड और स्पोर्ट्स, ठीक है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स को मैं अगर सेंट्रिक लेकर चलती हूँ तो मैं स्पोर्ट्स की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर डेफिनेटली ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। पर अगर मैं इससे हट के लेके चलती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि देयर इज नथिंग राइट। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं हम। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपना टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वी आर आइडेंटिफाइंग आवर टैलेंट इन दिस वे. सो या दिस इज हाउ वी डेवलप आवर टैलेंट, वी आइडेंटिफाई आवर टैलेंट। ओके, नाउ तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसलिए इस चैप्टर का नाम ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, अ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज एंड फूड्स, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज और फूड्स जो variety of exercises or foods are included on the basis of organized plan and scientific principles. और अब देखो, for the training, for the proper adequate training हमें number steps required है, like proper exercise चाहिए, proper तरह का food चाहिए, diet चाहिए, everything चाहिए, right? So training programs are organized on the basis of level of sportsmen. जो training programs हैं वो किस basis पे organize होते हैं, sportsmen के persons के level पे organize होते हैं। Besides physical exercises, it includes rehabilitation, treatment, assessment of presentation capacity, confidence building and motivation. तो physical exercises के साथ साथ हमें क्या क्या चाहिए, rehabilitational ट्रीटमेंट चाहिए, असेसमेंट चाहिए प्रेजेंटेशन कैपेसिटी का, कॉन्फिडेंस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए एंड मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। सो बिसाइड्स ऑल दैट स्टॉप की मतलब हमारे अंदर टैलेंट है, ओके, वी possess the potential, okay, we have the confidence, okay, but training is required for the expertness, right? So and besides all that, मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ हमें ये सब चीज़ें जैसे कि मोटिवेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, प्रेजेंटेशन कैपेसिटी हो गई, बिल्डिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें भी चाहिए। So in sports training, players are trained to be able to give excellent presentation as per their physical and mental abilities and capacities. तो
ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है, पर्पस समझ में आ गया। ट्रेनिंग का पर्पस अब मैं इन ब्रीफ बता रही हूँ, ये लास्ट है जो मैं ट्रेनिंग का पर्पस बता रही हूँ। इसके बाद मैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इंट्रो खत्म करेंगे इसके बाद। तो वाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे, पॉइंट्स की पॉइंट्स को मार्क करते हैं, आई विल नॉट राइट देम, नोट देम डाउन, और मेडिकेट कर रही हूँ, यू कैन राइट इट डाउन। सो नंबर 1 पॉइंट इज कि sports training is required for in order to gain expertness in any sport। पहला की पॉइंट क्या है, एक्सपर्टनेस गेन करने की, टू मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्ग, एबल, केपेबल, एंड किसी पर्सन को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, एबल बनाना है, केपेबल बनाना है और स्किल्ड बनाना है, उसके लिए इट इज रिक्वायर्ड। तीसरी बात ये है कि और why is this sports training required, this sports training is also required in order to, you know, the players are trained to be able to give the excellent presentation। जो प्लेयर्स हैं दे आर ट्रेंड होते किए जाते हैं एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन देने के लिए एज पर देयर फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज, अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज के बेसिस पर कैपेसिटी की, to give excellent presentation as per their physical and mental abilities and capacity। कॉन्सेप्ट क्या है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का, टैलेंट इज द एबिलिटी दैट अ पर्सन गेट्स इनहेट फ्रॉम। तो यही था। ओके, अच्छा, फ्लाइंग सिख, हिज टफ फिटनेस रूटीन देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मिल्खा सिंह was born in 1929 in Govindpura village in the Muzaffarpur district of Pakistan. He spent most of his childhood in poverty, since lost his 14 siblings to poverty, poor health, and lack of medical attention. During 1947 participation, he became an orphan and moved to India. He earned his living by working in a roadside restaurant before joining the army in 1951. During his military training, he realized his printing abilities. Havaldar, Havaldar Gurudev Singh persuaded him to run a cross-country race as a part of military training. He practiced hard and came to the limelight during the National Games at Patiala in 1956. He broke 200 meter, 400 meter records in the National Games at Cuttack in सुनो, इतना कुछ उन्होंने अचीव किया, गोल्फ भी खेला। नो रॉयल रोड गोज टिल सक्सेस, इनकी कोई रॉयल रोड सक्सेस तक नहीं जाती। टू रीच द वर्ल्ड लेवल आई एटलीस्ट डिड नॉट फाइंड एनी सच रोड, और मतलब कोई रास्ता नहीं था वर्ल्ड लेवल तक पहुंचने के लिए। जो रास्ता था वो सिर्फ था कि मैं मेहनत कर सकता था, प्रैक्टिस कर सकता था, ट्रेनिंग कर सकता था। रनिंग इज सच अ मेडिटेशन दैट वन मस्ट लीव ऑल द वर्ल्ड्स गुड to achieve success and make your body ready to take on challenge। Concentration, strategy and effort are long processes। और सुनो, 365 days a year वो रन करते थे, whether on rainy or windy, nothing could stop him from running। I did not find any work more important than my practice, and there was a time when I would see myself running even in my dreams, Singh writes in his memoir। सो ये सब उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं, एंड ये सब उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और बहुत सारे चीज़ें भी मिल चुकी हैं। तो अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट हैव बिकम इंक्रीजिंगली रेलेवेंट in sports performance। Samento, Angela, Priya, Arjun, especially in the last 20 years, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट बहुत ही रेलेवेंट हो गए स्पोर्ट्स में। पहले आप किस स्पोर्ट्स के लिए बने हो, उस स्पोर्ट्स के लिए अपने उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, दैट इज द फर्स्ट मेजर स्टेप, राइट। सेकेंड मेजर स्टेप इज कि जैसे कि मैंने बताया अभी, एंड कॉन्सेप्ट क्या है टैलेंट का, और ये है कि इट कैन बी डिफाइंड एज adequate aptitude or ability in one direction above the normal average। Does someone who has talent can do something without trying hard। मतलब कि देखो, टैलेंट मतलब कि कुछ कुछ ऐसा एप्टीट्यूड होना आपके अंदर, कुछ ऐसी एबिलिटी होना आपके अंदर एक डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन ओनली, एंड नॉर्मल एवरेज के ऊपर, अबव द नॉर्मल एवरेज। दस समवन जिसके पास टैलेंट होता है, हु हैज टैलेंट, कैन डू समथिंग विदाउट ट्राइंग हार्ड, कुछ कर सकता है बिना मेहनत किए। Talent identification can also be defined as a process by which children are encouraged to participate in the sport they are most likely to succeed based on selected parameters। These parameters are designed to predict performance capacity, considering the child's current level of fitness and maturity, as talent identification is often confused with latent development।
Right. So let's take a pause. Talent is the ability that a person gets innate from his parents and which helps a lot in performing well in sports. ठीक है? It is a capability of an individual for a specific task. When we talking about the talent identification in sports, then it is a process for correctly identify a developing athlete with the potential to become a successful elite performer in their respective sport. Talent identification involves an attempt